Good morning, students. Welcome in Sanskar Science Academy online classes. Firstly, extremely sorry due to absence for long period. In last class, we discussed you or I discussed you about nucleus. So, what is nucleus? Nucleus है क्या? So, simply activities of cell. Cell की जितनी भी activities होती हैं, activities of cell are controlled by nucleus. So, just I can say nucleus is a master cell organelles of cell. So it is also known as master organelles due to control of activities of cell. Now firstly, in 1831, nucleus was discovered by Robert Brown in orchid plant. Especially which part of orchid plant? So especially in root. Especially in orchid plant, रूट की जो सेल थी, सेल ऑफ रूट्स, उनमें उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था एंड गिव द नेम एरियोला. सो रॉबर्ट ब्राउन फर्स्टली डिस्कवर द न्यूक्लियस इन ऑर्किड रूट एंड नेम्ड एरियोला. सो स्पेशली साइंस ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सो साइंस ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोलॉजी. सो टुडे आवर पॉइंट इज कैरियोलॉजी. कैरियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ न्यूक्लियस. सो हाउ मेनी न्यूक्लियस कंटेन द सेल्स? स्पेशली सेल में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं? जनरली सिंगल न्यूक्लियस इज फाउंड इन सिंगल सेल. आई रिपीट, in single cell a single nucleus is present, but is especially in some animals or some cells, especially euglena. So what is euglena? Euglena is belong to protozoa phylum, or one member is also protophylum Paramecium. So especially in Paramecium, two cells are found. One is two nucleus are found. One is macro and second is micro. पैरामीशियम जो होता है, जो प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है, उसमें टू न्यूक्लियस होते हैं. एक साइज में बड़ा, इट मींस मैक्रो न्यूक्लियस, और एक स्मॉल साइज होता माइक्रो न्यूक्लियस. बट इन सम एनिमल्स, स्पेशली एस्केरिस, एपिडर्मल वॉल ऑफ एस्केरिस has many nucleus. Thus I can say it is multi-nucleated or multi-nucleus. Especially animal cell which have many nucleus or just multi-nucleated is called as syncytial cell. It means syncytial cell is always multi-nucleated. Next, any cell without nucleus. So simply in RBCs of mammals, RBCs of mammals are without nucleus. यानी उनमें क्या नहीं होता? nucleus नहीं होता. I repeat, it is a controversial point because in young RBCs of mammals has nucleus, but mature or adult RBC of mammals विदाउट न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता. मैच्योर में नहीं होता बट यंग में प्रेजेंट होगा. स्पेशली इन प्रोकैरियोटिक सेल. क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? तो स्पेशली इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरियाज हैज न्यूक्लियोइड instead of nucleus. It means prokaryotic cell में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और उसकी जगह कौन होता है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोइड और जैसा आई कैन से xenophore. So in prokaryotic cell xenophore or nucleoid is present instead of true nucleus or nucleus. Now what is the structure of nucleus? nucleus का structure क्या है? तो स्पेशली इट इज न्यूक्लियस एंड situated in protoplasm.
तो न्यूक्लियस कहाँ पर सिचुएटेड है? प्रोटोप्लाज्मा में। न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट और it consists 4 part. Number 1, nuclear membrane. Number 2, nucleoplasm. Number 3, nucleolus. And number 4, chromatin material. So especially nucleus has mainly 4 part, or this I can say nucleus is divided into 4 parts. First part is nuclear membrane, second part nucleoplasm, third part especially nucleolus, it is nucleolus, and fourth chromatin material. So first I discussed about nuclear membrane. So especially nucleus has 2 membrane. It is outer membrane and this is inner membrane. Both membranes are made up by or made up of lipid and protein. So just both membrane of nucleus are made up of lipid and protein. Between 2 membrane, a special space is present or found, which is known as interstitial space, and it is approximately 300 to 400 angstrom. Ribosomes are attached. Ribosomes are attached with the outer membrane. So I repeat, nucleus has 2 membrane, outer membrane or inner membrane. Thickness of each membrane is 75 angstrom. Between both membrane, a space or a cavity is found, which is known as interstitial space, or this I can say perinuclear space, and diameter is 300 to 400 angstrom. Especially ribosomes. So what is ribosomes? Ribosomes are smallest cell organisms which are found in cell and membraneless cell organisms. And ribosomes are attached with the outer membrane. What is the function of ribosome? So ribosomes are also known as protein factory because they help into synthesis of protein. वो प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करते हैं बच्चे? हेल्प करते हैं. सो राइबोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल. नेक्स्ट सेकंड पार्ट. व्हाट इज सेकंड पार्ट? Second part is nucleoplasm. So what is nucleoplasm? Actually we discussed about nucleoplasm in next class. Have a good day.